Good evening, everybody, and कल है राम नवमी and everybody is celebrating and is going to celebrate tomorrow's occasion. And yes, it's also a Sunday. So if you are just an active user on our Telegram channel, Quick Dental is the name. So you can simply looking, you will be looking at daily diamond MCQs जो पोस्ट हो रहे हैं. जेनेटिक्स पे है कुछ आज, एंड फार्मेकोलॉजी शायद अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा हमने क्रिएट किए थे. तो ऑलमोस्ट फॉर 2 days फ्रॉम ऑनवर्ड्स फार्मेकोलॉजी विल बी द टॉपिक ऑफ डेली डायमंड एमसीक्यूज. बट उसमें हम ये नहीं करेंगे यूट्यूब लाइव में. So welcome everybody. I am your host Dr. Mohan. And in the evening we were just having a podcast, a live podcast with ChatGPT, and we tried to ask few questions about, let's say, a Ferrell effect in prosthodontics, and what does that mean, and how it will affects the longevity of any, let's say, abutment or processes, even जो भी कुछ होता है. एंड उसके बाद में शायद मानसून कर्व, एंटी मानसून कर्व, कर्व ऑफ पी, और एक थी कर्व उसमें. तो बेस्ड ऑन दैट जितनी भी कर्व्स होती है, विल्सन्स कर्व. सो आउट ऑफ ऑल द 4 mentioned curves, which is the, let's say, फ्रीक्वेंसी कर्व या प्रोबेबिलिटी कर्व सबसे क्लोज कौन सी रहेगी. तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था. अलॉन्ग विद दैट स्क्यू टाइप का एक जो ये होता है, क्या कहते हैं उसे, सिंपली कर्व, एक वो बाय नॉमिनल कर्व, वो भी मीन मीडियन मोड, इनके बेसिस पे वो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था. तो वो लास्ट वाला एपिसोड आप चेक कर सकते हो. तो नॉट एवरी टाइम की बस मैं अकेला ही बात करूँगा. आई विल बी हैविंग ChatGPT एज अ को होस्ट. कुछ ज़्यादा उसमें करेक्शंस नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा रहते थे, बट राइट नाउ. And another thing I just want to share कि recently I was just going through a research paper, so in which all the chat GPTs, let's say, kind of large language model, they were used to answer questions. So almost 1400 questions were asked to these chatbots, और उनका करेक्शन का रेट, उनकी मिस्टेक्स या सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक आंसर कौन सा चैटबॉट देता है, so that can be also used while, let's say, studying dental sciences subjects. तो चैट जीपीटी तो हम लाइक यूज़ कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, लेट से जब से आया है वो, फॉर टेक्स्ट बेस्ड जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं. तो इफ़ यू जस्ट लाइक वाना हैंग अराउंड दैट पर्टिकुलर चैट बॉट्स, तो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है एक, इट हैज़ द हाइएस्ट, उसमें क्या कह सकते हैं, परसेंटेज की जो करेक्ट आंसर देता है. चैट जीपीटी भी है, बट वो 80-82% है. बहुत ज़्यादा करेक्शंस उसमें होते हैं, ज़्यादा करेक्ट नहीं होता. अलॉन्ग विद दैट, लेट्स से परप्लेक्सिटी एक है, पोई नाम का और एक चैट बॉट है, और शायद रिसेंटली ग्रोक भी आया है, तो ग्रोक शायद उसमें ऐड नहीं था. तो ऑल दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी जैसे, दे आर वेरी मच, लेट्स से, useful for studying anything, not just like dental sciences, but yes, you have to cross check each and everything, so that textbook भी आपको पढ़ना अच्छा होता है. But like just having all these types of रिसोर्सेज ऑनलाइन, जब आपको सिंपली एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, तो आप सिंपली उसको टाइप करके मैसेज सेंड कर सकते हो, एंड यू कैन गेट
explanations, you can get mock tests, we can just simply discuss जितने में आपके doubts हो. That's a very good teacher online जो है वो. तो but yes आपको cross check करना पड़ता है. So that was just a initial introduction. And yes. So let's start. Right about while just doing this live, I'm just simply thinking of each and every topic कि जितने भी मेरे दिमाग में आते हैं, like almost each and every high topic we already have covered in the Telegram live. Initially, right now they are recorded sessions on our Telegram channel. Quick Dental is the name, and also they are available on Spotify. तो 50-60 hours का एक content है. Simply आप एग्ज़ाम के टाइम के ट्रैवल करोगे तो उस टाइम पे आप उसको सुन सकते हो. 1 या 2 दिन पहले गए तो उसको भी इट्स नॉट वेरी लेट्स से कि गुड ऑप्शन की सभी बुक साथ में लेके जाओ. एक सिंगल वाली बुक जो है एमसीक्यू की, मोस्ट ऑफ द टाइम डेंटल साइंसेस के एमसीक्यूज़ की सेपरेट बुक ही साथ में ली जाती है फॉर द फास्ट जो होती है रिवीजन. स्वेट ग्लैंड जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो दीज आर द स्मॉल coiled tubular structures found in the skin that produces sweat. So it helps in regulating the body temperature. Coiled tubular structures होते हैं स्किन के अंदर, and they also eliminate the waste product through perspiration. Okay, so there are two main types of sweat glands. First is eccrine and second is apocrine. Okay, so eccrine glands, they are found all over the body, especially on the palm, soles and forehead. And eccrine glands, they open directly onto the skin surface. So what they produce? So a watery and odorless sweat, mainly for cooling the body, forehead, palms and soles. Eccrine glands. Okay, while apocrine glands, so they are located in the areas like armpits, groin and around the nipples. So they open into hair follicles. Which one? Apocrine. Armpit में, groin में, around the nipples होते हैं. So they produce a thicker sweat that when broken down by the bacteria can cause body odor. Okay, apocrine glands की वजह से वो smell आती है. So usually become very active during puberty and respond to stress and emotional stimuli as well. Okay. So eccrine and apocrine, different location, उसका basic secretion कहाँ पे open होता है, directly होता है, indirectly होता है. After that, sebaceous glands again. So they are small oil-producing glands found in the skin of the mammals, and they are part of the integumentary system and are closely associated with the hair follicles. Okay.
इंटेगुमेंटरी सिस्टम हेयर फॉलिकल्स के साथ में क्लोजली एसोसिएट होती है सेबेशियस ग्लैंड्स. So they produce an oily substance called as sebum, that is a secretion of the sebaceous glands. And what is the function of this sebum? So it lubricates and waterproofs the skin and the hair. It also has antibacterial properties, and it also maintains the skin flexibility. तो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी along with the antibacterial properties and waterproofing lubrication ये sebum की वजह से होता है. So they are found all over the body except the palms of the hands and the soles of the feet. So sebaceous glands are absent on these palms and soles, and they become more active during the puberty due to the androgens, जो sex hormones होते हैं उसकी वजह से sebaceous glands की activity ज़्यादा बढ़ती है. And disorders overactivity of the sebaceous glands can lead to acne, seborrhea, or even blocked pores. Okay. इसके बाद में we will start extraocular muscles. So the muscles outside the eyeball and that control the movement of the eye in different directions. Okay, जितनी भी possible हो सकती है उतनी. And they are essential for what? Coordination, smooth operation होती है and precise eye movements. Okay, so coordination के लिए important होती है these extraocular muscles which are situated outside the eyeball. So there are 6 extraocular muscles. So first is superior rectus, which moves the eye upward, that is elevation. Then inferior rectus is the second extraocular muscle which moves the eye downward, that is depression. Third is lateral rectus, which moves the eye outward, that means abduction. Lateral rectus away करता है, outward करता है. While medial rectus, it moves the eye inward, that is adduction. Okay. Superior rectus, inferior rectus, elevation, depression, medial rectus, lateral rectus. Medial करता है adduction, away होता है abduction, lateral rectus. And we also have superior and inferior oblique. So superior oblique rotates the top of the eye towards the nose and it moves downward and outward. Okay, towards the nose करती है rotate और downward करती है outward भी करती है. Okay, while inferior oblique it rotates the top of the eye away from the nose. Okay, and moves it upward and outward. तो आउटवर्ड ही होती है बट टुवर्ड्स नोज, अवे फ्रॉम द नोज, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. ओके, सो नर्व सप्लाई इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली इन द निमोनिक इज SO4LR6. सो lateral rectus supplied by the cranial nerve 6, that is abduction, and SO, that is superior oblique cranial nerve 4 जो होती है वो ट्रोक्लियर इसको सप्लाई करती है. And all the other muscles are supplied by the oculomotor nerve, that is cranial nerve number 3, third. Okay.
After that, muscles of the external ear, that is auricular muscles, we are going to just like read. So these are the vestigial in humans but more functional in animals. जैसे हम blue bugs देखते हैं, black bugs देखते हैं, okay? वाइल्ड लाइफ का हमारा जो ब्लॉग होता है, तो एवरी टाइम वी जस्ट लाइक लुक एट देम, दे सिंपली जस्ट शेक देयर ईयर्स बैक एंड फोर्थ. डॉगीज भी करती है, इरेट करते हैं, डॉगीज क्लोज हो जाती है, इरेट करते हैं, क्लोज हो जाती है. हम हमारे में से कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, दे कैन सिंपली मूव देयर एक्सटर्नल ईयर, जो पिन्ना है उसको आगे पीछे कर सकते हैं. स्कूल में सीखा था मैंने एक मेरे फ्रेंड से. नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. सो बट एनिमल्स में ज़्यादा फंक्शनल होती है. सो ऑरिकुलरिस एंटेरियर, ऑरिकुलरिस सुपेरियर एंड ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर. सो एंटेरियर, पोस्टीरियर एंड सुपेरियर, दीज आर द थ्री मसल्स which pulls the ear forward, upward and backward, जैसे नाम से है. And they are supplied by the facial nerve, that is cranial nerve number 7. Okay. Auricularis anterior, posterior, superior. Okay. Then muscles of the middle ear, they are functionally very very important and they protect the inner ear from the loud noises. So middle ear के muscles होते हैं tensor tympani and staped ears. So function of the tensor tympani, it tenses the tympanic membrane to dampen the loud sound, that is chewing के टाइम पे. वरना हम ही खाएंगे तो हमारे कान फट जाएंगे ज़्यादा कड़क चीज़ खाएंगे तो. And nerve supply of the tensor tympani, that is mandibular nerve branch of a cranial nerve, trigeminal fifth वाली tensor tympani. While staped ears, it is supplied by the facial nerve, that is cranial nerve number 7, and it stabilizes the stapes bone and control its movement to protect the inner ear. Okay. So that will be the end of YouTube live. आज काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो I will be also moving towards the venues. देखते हैं, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है everywhere. थोड़ी देर बाद में फिर से मिलते हैं. See you soon. Goodbye.